जैद आपने किस नंबर पे भेजा है? So Learnivio, WhatsApp. हाँ हाँ, कैन यू प्लीज लाइक कैन यू से आउट द नंबर? Okay. Sir. So 919310284958. वेट 9310284958. 58. Yeah. ओके, डबल टिक हो गया? No, sir. नो, ओके। Sir, let me 1 second. हाँ, check it है ना? Okay, so I have got Hanifa's, I think. Hanifa, आपने नाम नहीं लिखा है? I did, sir. You did? Yes, sir. अच्छा, PDF में देखिए आप अपने। Okay. So that it got cropped. It got crop. Like answers भी crop हो गए क्या? No, Answers हैं सारे? yes, sir. The name got cropped. Name got cropped. Okay. आपने solve नहीं किया है पूरा। I was confused. Confused? Confused with what? ठीक था, सब कुछ सॉल्व कर लेना था आपको, फिर आपने फोर्थ सवाल भी नहीं किया। अलीना आपने भेज दिया? सर एक्चुअली जो नंबर है वो मेरे बाबा के मोबाइल पे है और बाबा ऑफिस में है, तो आई एम आस्किंग हिम कि वो फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, ओके। Sir, could you explain the fourth one? Fourth one? Yes. हाँ sure. Fourth one. देखिए, so heptane and octane it form an ideal solution, है ना? As soon as you see this word an ideal solution, अच्छा देखिए एक और चीज हमको बहुत जो अफसोस है, in this question let us look at the first question, है ना? Write the two characteristics of ideal solution and give one example. Okay, ठीक है हनीफा? Yes, yes, sir. अब बताइए एग्जाम्पल बताइए एक आप, इसी क्वेश्चन पेपर में है ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, राइट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. सो यू हैव टू यूज दोस थिंग्स आल्सो, कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो कई बार क्या होगा, आपको जवाब क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा, किसी एक सवाल का दूसरे सवाल से रिलेशनशिप होगा, ठीक है? सो आई वाज होपिंग दैट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर बेंजीन एंड टोलुइन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन आल्सो हैव गिवन यू एन एग्जांपल in the text, in the notes. But even if you don't remember, you can read up the question and then you can write heptane and octane. Okay, fine. So you're asking about the fourth question. Heptane or octane form ideal solution. As soon as they form ideal solution, that means they will follow the Raoult's law, right? So they will follow the Raoult's law. When we know that. Next one is at 203 Kelvin, the vapor pressure of two liquid components is 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal. The vapor pressure of the two liquid components are this much and this much. Okay, what will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram heptane and 35.0 gram of octane? So first of all, what we'll do, we will calculate the number of moles. Okay, so number of moles of heptane will be equal to how much? 26 gram upon molar mass. Heptane is how much? 6 carbons. Yes. Yeah, six carbons. Yes. Hydrogen how much? How many hydrogens? Hydrogen will be one. Heptane है ना? Alkene है ना? What is the formula for alkene? CN2N plus 1. CN नहीं, ये देखिए ये सारी चीजें यही चीजें है ना, क्या करेंगे, आपको आंसर नहीं देने देंगे। इवन इफ यू नो द Raoult's law and you know everything, if you don't know heptane, सवाल आगे नहीं खिसकेगा, है ना? CnH2n plus 2, right? So C6H14,
C6H14. So what will be the molar mass? Molar mass कितना होगा इसका बताइए? 12 into 6 plus 14. Tell me what will be the answer? 86. 12 6 86 होगा पूरा 12. 12 6 is 72, so 72 plus 14 will be 86. हाँ ठीक है. You're saying 12 6 are 72, right? Plus 14, which will give me 6, 7 plus 1, 8, 86. So 26 upon 86. Number of moles of octane, right? Yes. Will be equal to 35 upon octane will be how much? C8. Oh, sorry, it was heptane. Na? Sorry, hexane. I'm sorry. Wait a second. Sorry. This will be C7. H will be 16. Okay. So इसमें बस आप क्या कीजिए, आपको 13 ऐड करना पड़ेगा. I think so. You have to add how much? 12 and how many hydrogens we have added? 2 ना. 14 ऐड कर देते हैं इसमें, right? You have added 1 carbon, 12, and we have added 2 hydrogens. That means you have added 14, right? So you add 14 here. So 6 4 10 का 0 हट रहा है 1 and 8 2 10. So this will be 100. Okay. 100 and then octane. Octane will be C8 H how much? 18. So again here also we have what we have done. We have added 1 carbon and 12. So you add 12 to 100. It will be 112. Okay, it will be 112. Okay, so you can calculate the, first of all, here we will calculate the number of moles. 26 upon 100, it will be equal to how much? 26 upon 100 will be 0.26. correct. 0.26. 35 upon 112. 35 upon 112. 0.31. Approximately 0.31. Correct. We approximately 0.31. So you have got the number of moles. So now here we will calculate the number of moles of, sorry, the mole fraction of heptane and octane. Okay. Heptane will be equal to 0.26 upon 0.21 plus 0.26. Number of moles of octane, it will be equal to how much? Calculate. Let us leave octane now. Calculate heptane. 0.26 upon कितना हो जाएगा? 0.21 plus 26 will be equal to 0.47. 0.4. Yes. So it is 0.31. Sorry? You wrote 0. Sorry. 0.31. Sorry. 57. 57. So this will be approximately equal to 0.464748. Something like that it will be equal to. Calculate and tell me now. 0.26 upon 0.57. 0.45. 0.45. 45 से ज्यादा होगा. What is the next digit? 4 5 6. 456. Na? So we can take this as 0.46 only, right? If we round it off, right? Number of moles of octane will be equal to how much? 1 minus 0.46, which will be equal to 0. How much? 45. 54, no? 5. This will be equal to 54. Okay. Now, so we have calculated the number of moles of octane and number of moles of heptane. Number of moles of octane, number of moles of heptane. Okay. Now, what they are saying? They are saying that the vapor pressure of the two liquid component is this much and this one. What will be the vapor pressure of the mixture, right? So they have already said this is the vapor pressure of the two liquids. Yes or no? For Yes. Vapor pressure of heptane is equal to how much? 105. 10.52.
5.2 है ना. This is the vapor pressure of heptane. Then partial pressure of heptane will be equal to the vapor pressure. Now, this is for the pure one into the mole fraction, yes or no? Now you Yes. can directly, either you can do like this, partial pressure of heptane will be equal to 0.46 into 105.2. Partial pressure of octane will be equal to 0.54 into 46.8. Okay. And then you Yes, multiply okay. these two things, add these two things, and then you will get the vapor pressure. Okay, vapor pressure of the solution. Right. Okay, What we are doing, P total will be equal to P naught A chi A plus P naught B chi B. P naught A, P naught B was given. You calculated chi A and chi B and then just plugged in the values. Okay. Okay. Okay, fine. So let me see. Zad, acha, you have sent the photos, Zad. Okay. Okay. Yes. So let me see first Alina's. One wording that you should be careful of is that whenever you're defining ideal solution, it should be it obeys Rod's law at all concentration. You can write, okay, either you can write over an entire range of concentration or you can write at all concentration. It obeys Rod's law. Okay, Alina. Interaction between solvent and solvent. These solutions are found by mixing two compounds that are integral molecular. Oh my god, enthalpy of mixing. देखिए बहुत ही छोटा 2 मार्क्स का सवाल था. So obeys Rod's law at all concentration. Then the two characteristics will be delta V mix is equal to 0, delta H mix is equal to 0, है ना? And then one example यहीं पे आपके पास heptane plus octane, है ना? Also there will be example benzene plus toluene, bromethane, chloroethane. All of these are examples. Okay. Next is this question, Henry's law. Here also this question was easy. Most of you have done it right only. Calculation हमको देखना पड़ेगा बस. हाँ. For example, bromoethane and chloroethane is correct. या फिर उसमें benzene and toluene होना चाहिए. नहीं. I'm just saying that bromethane, chloroethane is also fine. Benzene and toluene is also fine. Heptane and octane is also fine. Okay, you just have to give one example. Okay. Okay, sir. So let us look at this Henry's law question. Okay. So let me delete this part. Okay. Henry's law constant for the molality of methane is 4.27 into 10 to the power 5 mmHg. So that means Kh is equal to how much? 4.27 into 10 to the power 5 mm of Hg. Then calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of Hg, right? That means this is the pressure, and this is the Kh. So according to Henry's law, what does Henry's law say? It says that the pressure is equal to Kh into chi B. Chi B. Now chi B is what? It is a concentration. Concentration is what? The amount of solute inside solution. That is what? Solubility only. That is solubility. So chi B will be equal to how much? The pressure that they have given divided by the Kh. So what is the pressure that they have given? It is 760. Right? Mm of Hg will be the unit and both will get cancelled. Here also mm of Hg is there. And here also 4.27 into 10 to the power 5 mm of Hg, right? So both of these will get cancelled. And obviously mole fraction does not have any units. So we'll get this as 760 upon 427, you can write, 427 into, here there will be remaining how much? 10 to the power 3, right? 10 to the power 3 will go above and it will become 10 to the power minus 3, right? 10 to the power minus 3. Now what you can do here, 760 upon 427, you can approximate 427 to 430, okay? Approximate 427 to 430 and then you can get the answer. So 760 divided by 430. So 0, 0 will cancel out. And then you have 43 and here you have 76.
43 and 76. So if I one point something will be happening. 1 point. So let us suppose we have 4 and here we have below we have 4 and here we have 7. Somewhere around 7.5 will be there. 7.5, 7.6 के around होगा कुछ. Okay. 10 to the power -3 only, na? Yes, I think so. What did you guys get? Sir, I got 1.78. 1.78. That will be fine. 1.78 is also fine. Will be something around 1.75, 6, 7, 8 के करीब कुछ आ जाएगा आपका आंसर. ठीक है. 1.78 ये अलीना का भी आंसर है. फाइन. ठीक है. 10 to the power माइनस के बाद अलीना ने साफ से नहीं लिखा है कितना होगा. Okay. Next, states Rawls law for the solution containing. So Rawls law, what does it state? It states that for a solution containing volatile components, the pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. Pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. Okay, so you have to write this part, that the Rawls law for solution containing volatile components says that pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. That you have to write. What is the similarity between Rawls law and Henry's law? So in both the cases, Rawls law also says that pressure is directly proportional to the mole fraction. Henry's law also says that the pressure is directly proportional to the mole fraction. So this is one of the commonality between Rawls law and Henry's law. One more common thing between both of them is Henry's law is also applicable for volatile components. That means the components that have some vapor pressure at normal temperature. है ना? Rawls law is also applicable for volatile components. है ना? For Henry's law, we know that it is applicable for liquid and gas. Okay. But both of these things are volatile only. Liquid is also volatile, gas is also volatile. Similarly, Rawls law is applicable to liquid and liquid, or liquid is also volatile. So both of these are applicable to volatile components. The next common thing between them is what? Both says that vapor pressure is directly proportional to the mole fraction. Okay. Now I think this fifth question everyone must have done this right now. At higher altitude, the partial pressure of oxygen is less than the ground level. That is why the oxygen concentration becomes less in blood or tissue. Hence, people suffer anoxia. ठीक है. Let me see other answers. Rawls for partial pressure. जैद ने ये ठीक लिखा है आपका. उसके बाद जैद आपने लास्ट सवाल नहीं किया, फिफ्थ वाला? Yes, I did. Did? Yeah. आपने भेजा नहीं है तो ठीक है. Sir, same page पे. सेम पेज पे? Yeah, same page. अरे फोर्थ के बाद तो है ही नहीं कोई. आप देखिए. There are 3 pages total. हाँ, there are 3 pages, लेकिन उसमें क्या है ना, जो फर्स्ट पेज है वो आपने 2 बार भेजा हुआ है. Oh, sorry. That is. At higher altitude, the pressure is low and oxygen is not completely soluble. ठीक है. न्यूमेरिकल्स में आप लोग को काम करना पड़ेगा. हनीफा, अलीना, और बोथ ऑफ यू. Okay, sir. नहीं भेजा था ना आपने? No, sir. चलिए. So last class में कहाँ तक किया था हम लोगों ने? Okay, so we did till elevation boiling point, right? Elevation boiling point, right? चलिए, write the next topic. क्या हुआ, PDF नहीं गया था आपका सर? No, sir. There is a technical issue in the office. Because of that, PDF is not good. अच्छा. Oh, okay, fine. Okay. So in the last class, we were talking about colligative property, right? We're talking about colligative property. Alina, बताइए, what is colligative property? What are colligative property? Colligative properties. एक मिनट. Colligative property.
रिवाइज करा कीजिए आप लोग, रिवाइज एकदम बिल्कुल पढ़ना लिखना बंद कर दिया आप लोगों ने, क्या हो गया आप लोगों को? कल ही पढ़ा है ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यस अलीना? Colligative properties depends on the solute particles. Zed? So the colligative properties are the properties which depend on the quantity of the solution quantity and does not depend on the quality of quality Of what? of solution. Of what? Solution, I think. Solution नहीं, Yeah. solution नहीं, ठीक है. Colligative properties are those properties which depend on the number of solute particles ना. प्लीज आप लोग प्लीज रीड कीजिए नोट्स. अलीना आपने पढ़ा नहीं था? नहीं सर, मैंने पढ़ा था, मैंने आपको वही बताया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. आपने बोला, आपने हम बता रहे हैं, आपने नंबर छोड़ दिया था. आपने बोला solute particles. You said that colligative properties are those properties which depend on solute particles. Okay. नंबर आपने छोड़ दिया. चलिए ठीक है, आपने रिवाइज किया था तो इट्स फाइन. Now we have done two colligative properties. One is relative lowering of vapor pressure, right? And the next one was the elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Two more is remaining. One is depression in freezing point, and the other one is osmotic pressure. Okay, the other one is osmotic pressure. So we'll start with depression in freezing point. Right, the third one. Depression in freezing point. Depression in freezing point. कि ज़ैद आपको मिला बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड. ठीक है, चलिए आपने इसको ठीक से लिखा है. चलिए फोर्थ वाला आंसर भी आपका कंप्लीट हो गया. ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. यू हैव अंडरस्टूड अबाउट what is the boiling point, but what is freezing point? देखिए, at freezing point what happens, please don't write anything. At freezing point what happens, those who know boiling point में क्या होता है? Liquid and gas are in equilibrium, yes or no? Liquid and gas both are in equilibrium, correct hai? Yes. Yes sir. Right. At freezing point what will happen? There will be solid and there will be liquid, right? And at freezing point the vapor pressure due to solid will be equal to the vapor pressure due to of liquid. Okay, at freezing point what is the equilibrium? Solid is in equilibrium with liquid, and that is why the whatever the vapor pressure of solid is there, that will be the same vapor pressure of liquid also. Okay, now in order to understand freezing point, you have to understand the graph of vapor pressure. So first of all I will make a plot like this. Okay, don't write this, just listen. Here we have vapor pressure, okay, and here we have temperature. Okay, now if I take simple water, then if the temperature is very low, the vapor pressure will also be very low, है ना? Even solid, even ice can do sublimation. Sublimation में क्या होता है? Solid से direct gas, right? So anything which is liquid at room temperature, it can also sublimate at lower temperature when it is solid. It can also sublimate. Okay, now when sublimation happens, what you will have? This is one of the line. Okay, this is one of the line, and this line it represents what? It represents the solid liquid equilibria. That means at each of these points there is solid and liquid equilibria. There is equilibrium between solid and liquid. Okay, that means at all of these points we have freezing point. But please remember, ऐसा नहीं कि सारे point freezing point है. Each of these are freezing point at a particular vapor pressure, है ना? At a particular vapor pressure, these are freezing point. But then there will be 0 degrees Celsius. At 0 degrees Celsius, what will happen? Things will start to become liquid. And after 0 degrees Celsius, it will be liquid.
will be liquid, 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 liquid. Sorry, liquid, 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 and then it will become somewhere at 100 degrees Celsius. It will become gas. But we don't have to look at gas. We just need this part. So this is representing the area where it is liquid, and this line is representing the area where it is, where a particular solvent is solid. Okay. Now this is a normal liquid, which is pure solvent, which is pure solvent. But we all know, if I take a solution, then if I say that this is the normal room temperature, its vapor pressure will be a bit low. Yes or no? Than the pure solvent. Pure solvent will have, solution will have vapor pressure lower than that of pure solvent. All of you agree with this point? Yes or no? Please tell me. Solution will have vapor pressure lower than that of pure solvent. Okay. Now that is why what will happen. Zad and Alina, Yes, agree sir. to this point? And that is why what will happen. The vapor pressure will be somewhere here for the solution. And as we lower the temperature, as we are lowering the temperature, it is joining the line at this point. And as you can see, this was for the pure solvent. This is the temperature. And for solution, this is the temperature for freezing point. This is the temperature for freezing point. So this is for T0F. That means the freezing point of pure solvent. And this point is TF, freezing point of the solution, And the difference here, it is equal to what? It is equal to delta T. It is what? It is equal to delta T. That is the depression in freezing point. All of you got this point? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. What about others? Yes, sir. Hanifa? got it, sir. Got ना? देखिए. Okay. देखिए एक पॉइंट जो है ना हनीफा, आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो आपको एक चीज ये लेके चलना पड़ेगा, दैट सी if I will have only liquid, then obviously there will be some vapor pressure, है ना? But if I add something solid, है ना, in this liquid, I add something solid, then obviously the vapor pressure will happen what? The vapor pressure will decrease because we have added something solid, and solid, it does not have any vapor pressure. Solid का vapor तो बनता ही नहीं है, right? So if I have pure liquid, then the vapor pressure will be higher than the solution. Okay, that is why we are writing the vapor pressure of solution with solid solute is lower than that of pure solvent, Okay, chaliye. Okay. Now, what is depression in freezing point? So what we saw, first of all, we'll write the freezing point is the temperature at which solid and liquid states of a substance have the same vapor pressure. Okay. Then the next point, will be, this is the difference now. This is the difference. So what will write? You can write the freezing point of a solution with solid solute is lower than the pure solvent, lower than the freezing point of pure solvent.
then this difference in the freezing point is called as depression in freezing point. Okay, so what we'll write here, delta TF will be equal to the freezing point of pure solvent minus the freezing point of solution. Okay, and if I add more and more solute, then the freezing point will even become more and more less, right? The freezing point will become, and it will decrease with a greater magnitude, and hence we can write delta TF is directly proportional to the concentration of solute, and hence we can write delta TF if I remove the proportionality sign. Okay, the concentration term again, which is directly proportional, it is molality, and then we can write delta TF is equal to Kf into molality. Delta TF is equal to Kf into molality. Okay. Now this is molality. Kf. Now Kf has different name. It is molar freezing constant. Molar freezing. Wait a second. Can write the molar freezing point depression constant. Freezing point depression constant. But you may hear mostly it is as molar cryoscopic constant. Okay, molar cryoscopic constant. This delta TF is what? It is the difference T naught F minus TF. What is T naught F? The freezing point of pure solvent, and TF is freezing point of solution. Can you please write this much? Let me know when you're done. Done now, all of you? Hanifa, done? Oh, just a minute, sir. Okay. Done. Okay. Now write the topic. No molar freezing point. Depression constant. Molar freezing point depression constant. Okay. It has been denoted by Kf. It is denoted by Kf. So we all know that delta TF will be equal to Kf into M, that is molality, and hence Kf will be equal to how much? Kf will be equal to delta TF upon M. Delta TF upon M. Okay. Now if I look at the unit here, now delta TF will be what? In Kelvin. Molality will be in what? Moles per kg. Right? So what will happen? Kg inverse will go above. So Kelvin, Kg inverse will go above and it will become Kg. Mole will go above and it will become mole inverse. So this will be Kelvin, Kg, mole inverse. This will be
Kelvin, kg, mole inverse. Okay. Now, what is, if I define Kf, what is Kf? We'll say that when, all right, we should write for a solution of, of 1 mole, we can write delta Tf is equal to Kf into m, is equal to Kf into m. Now, what we can write, m is what? M is equal to 1. So Kf into 1. है ना? Now Kf is equal to delta Tf only when it is, when the concentration of solution is 1 molar. So what we'll write, what is the definition of molar freezing point depression constant? It is delta Tf is the, sorry, Kf is the depression in freezing point when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solution. Sorry, 1000 gram of solute, 1000 gram of solvent here, because it is molality, 1000 gram of solvent. Done, guys? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay. Done, sir. Done, na? Okay. Now, right, determination of molar mass. Determination of molar mass using depression in freezing point. Okay. So who will tell me depression in freezing point is equal to how much? Delta Tf is equal to how much? Kf into delta Tf is equal to, yes, Alina, Hanifa, delta Tf is equal to Kf into 1. yes. ये तो एक केस लिया था ना हमने फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर, ये केस लिया था हमने, है ना? जनरली इट इज इक्वल टू क्या, हमने अभी क्या लिखा है, अभी बताइए, ये इंपॉर्टेंट है ना आपका, वो तो एक केस लिया था हमने, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हनीफा एंड अलीना, प्लीज टेल मी नाउ, ये एक केस है 1 मोलर लिया था, जो क्यों वी हैव टू डिफाइन, सी आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इन फिजिक्स आल्सो, अगर नहीं देखा तो ध्यान दीजिएगा, whenever you have to define a constant, whenever you have to define a constant, you take the variable as unity. ठीक है? This is a very common theme in science, mainly in physics and chemistry. When the physical sciences, they will have this theme wherever you have to define a constant. जैसे gravitational constant को define करना होगा तो कैसे define कीजिएगा, है ना? ठीक है? So whenever you have to define the constant, जो gravitational force है ना, वो क्या होता है? Force is equal to G m1 m2 upon r square. Yes or no? Yes. अगर mass, if I take the mass of the first object, second object, दोनों को 1 ले लिया हमने, and the distance between them is also equal to 1 meter, right? Then this gravitational force, this constant gravitation, it is equal to the force between two masses, between the masses of 1 kg with the distance between them is equal to 1 meter, है ना? So that is the force that is equal to G. जब भी constant को define करते हैं तो जो variables होते हैं उनको हम लोग क्या रख देते हैं? Unity रख देते हैं ना? So this is one of the keys that we have taken in order to define delta TF. Okay, in order to define delta TF. Okay, so determination of molar mass, delta TF is equal to Kf into m. This is generally speaking, this is the case. Now m is equal to how much?
Molality is equal to, tell me what is the formula for molality? Zaid, Alina, Hanifa, molality is equal to so number of moles of solute divided by moles of solvent. अलीना बताइए. Yeah. Number of moles of solute divided by mass of solvent. Okay. Mass of solvent in what units? In 1 mole. आप एकदम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. हनीफा, हनीफा बताइए. In kgs. In kg. Alina, Alina. Yes sir. You want class on concentration terms? नहीं किया क्या प्रैक्टिस आपने? नहीं सर, वो वाला टॉपिक आज रिवाइज नहीं करा मैंने. डेली रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी ना. जी ठीक है, क्लास के बाद आप रुकिएगा. m is equal to number of moles सर of. बट क्लास के बाद वो मेरी दूसरी क्लास है. कौन सी क्लास है? कितने यहाँ बजे से? पे वो होगी ऐसी 6:35 से. ऐसे ही जी वो टाइम 6:30 6:30 ना? नहीं सॉरी 5:35 या. कौन सी क्लास है 5:35 पे आपकी? वो यहाँ पर एक ज्वाइन करी हुई है मैंने इसके लिए. यहाँ पर मतलब अपने घर में? नहीं, ये हमारे लर्निंग पास में? ट्यूशन होती है उसके लिए. अच्छा, वो घर पे ही ना? घर पे ही? या अच्छा. So NB is equal to what? Sorry, molality is equal to NB upon mass of solvent in kgs. Okay, mass of solvent in kgs. And what is number of moles equal to? Number of moles is equal to the mass of solute divided by the molar mass of solute. Okay, so we will plug in this value here. So NB will be equal to what? WB upon molar mass of solute into mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg. ठीक है, अब यहाँ पे इस मोलालिटी वाले फॉर्मूला में इसको हम प्लग इन कर देंगे. सो kf into molality is equal to what? WB. Delta TF is equal to kf into WB upon the molar mass of B into the given mass, the solvent, the mass in kg. Mass of solvent in kg. Okay, this will be equal to delta TF. Now, if I want to put the mass of solvent in, if it is given in grams, then you can write this as kf into WB into 1000 upon MB into WA. This will be delta TF. Okay, delta TF. Now, please listen here. If I want to write MB is equal to how much? MB will be equal to same thing, kf into the mass of solvent that you have added in the solution into 1000 divided by delta TF into WA. Okay, so this is the formula for here you will write what is MB? Molar mass of solute. Kf mole depression constant. And depression and freezing point constant के शॉर्ट में लिख दिया हमने. WB mass of solute in solution, जो भी आपने ऐड किया है. Next is WA. It is the mass of solvent. Okay, mass of solvent. दूसरी चीज जो हम बोलेंगे इस फॉर्मूले के साथ साथ आप इसको भी याद रखिएगा. ठीक है, मेन लेकिन कंसेप्ट है.
कंसेप्ट अगर आपको ये भी फॉर्मूला बस याद है ना, देन ऑल्सो इट इज एनफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टर्म, अगर आपको ये भी याद है तब भी आपके लिए काफी है। बड़े फॉर्मूलेस को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। हनीफा आपकी भी क्लास है क्या इसके बाद? नहीं सर। नो, ओके। अलीना यू हैव अ क्लास 10 मिनट के बाद? यस सर, वो मैथ्स के लिए है। मैथ्स के लिए? जी, 1 मिनट में टाइम चेक करती हूँ। हाँ, एक बार टाइमिंग प्लीज आप चेक कर लीजिए ना, हम लोग कुछ सवाल कर लेंगे फिर। वी कैन डू वन क्वेश्चन देन। ओके सर, आज की क्लास हमारी वो 6 o'clock पे। 6 o'clock है ना, सो वी कैन गो फॉर अ वाइल। चलिए, please let me know if you're done writing the question. Sorry, if you're done writing this determination of molar mass of solute from depression in freezing point. बस अलीना का हुआ है, ज़ैद एंड हनीफा Sudden. डन? Done sir. Okay. So write a question. So please write this question. All of you wrote the question, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay, so the question is, Hanifa, can you please read the question? Yes sir. 1.02 grams of urea when dissolved in 98.5 grams of certain solvent decreases its freezing point by 0.211 Kelvin. 1.60 gram of unknown compound when dissolved in 86 grams of the same solvent depresses the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of the unknown compound. Calculate the molar mass of unknown compound, right? Okay. Yes. So first thing is, we have been given two cases in here, right? We have been given here two cases.
The case 1 is for urea. The case 1 is for urea. In urea, what are the things that we have been given? We have been given the urea, 1.2 gram of urea is dissolved in 98.5 gram of certain solvent. That means you have been given the mass of solute that we have added. We have also been given the mass of solvent. Yes or no? Mass of solvent is also given 98.5 gram of certain solvent, right? And then we have been given the delta TS. Now, when we have been given urea, urea is what? It is a molecule. Urea is a molecule, right? And the questionnaire, they expect you to know the formula for urea. They expect you to know the formula for urea, and that is why they also expect you to know the molar mass of urea, because they have given. अगर यहीं पे आपके पास ग्लूकोज दिया रहता तो भी आपको क्या एक्सपेक्ट करते कि मोलर मास आपको पता होना चाहिए, मोलर मास आपको पता होना चाहिए. So you have been given here 1, 2, 3 and 4 different variables. The only variable missing in this case is what? It is Kf. जो Kf है आपको solvent का वो नहीं दिया हुआ है ना. So from the first case what you have to calculate? You have to calculate the Kf. If you remember the formula जो अभी अभी हम लोगों ने लिखा है, what we have written just now, delta Ts, it is equal to delta TF is equal to Kf into M, right? Kf into M. And what is molality is equal to? Molality is equal to Kf into molality will be equal to number of moles upon the mass of solvent in kg, right? Mass of solvent in kg. Now from here we can calculate Kf. We can write Kf will be equal to the mass of solvent in kg divided by the number of moles of solute into the depression in freezing point delta TF. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या निकालना है, बस number of moles of B. So number of moles of B will be equal to the given mass of B divided by the molar mass of B. So how many of you know the formula for urea? Urea का formula क्या होता है बताइए. नहीं पता. Sir, I don't remember. You don't remember? Okay, fine. देखिए, urea will have two NH2 groups, okay? And there will be one carbonyl group. So this is the formula for urea. C double bond O, which has bond with NH2 and NH2. Okay. Now calculate the molar mass. Molar mass तो calculate कर सकते हैं ना. बताइए क्या होगा molar mass? You have one carbon, that will be 12 plus 16 plus. How many nitrogens are there? There are 2 nitrogens. That means 28 plus 4 hydrogens. कितना हो जाएगा? 16. ठीक है. अब यूरिया का आपको मोलर मास याद हो जाना चाहिए कि it will be 60. Now the given mass is how much? The given mass हम लोग क्या दिया हुआ है? 1.02 ग्राम है ना. So NB will be equal to 1.02 grams divided by 60 grams per mole. अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है ना. इसमें बस आप क्या कीजिए, ग्राम्स और ग्राम्स को कैंसिल कर दीजिए एंड देन यू विल राइट हियर KF. KF will be equal to the WA in kg. WA क्या दिया हुआ है? 98.5 है ना. 98.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.0985. Yes or no? In kg, Yes, sir. 98.5 grams will be equal to 0.0985 kg. ठीक है. So WA in kg को क्या लिख सकते हैं हम लोग? So will be 0.0985 divided by number of moles कितना है हमारा पास? It is equal to 1.02. अब into 60 कर देंगे because divide by 60 will go above and it will become into 60 into delta TF. Delta TF कितना है हमारे पास? Decreases for freezing point by 0.211. ठीक है. So if you calculate this, you will get the KF. चलिए try to calculate this.
So it's coming 1.22. What about others? Alina, Hanifa बताइए. Yes, Alina and Hanifa. I got 1.12. 1.12. Okay, let us see. Alina. Sir, 1.2. 1.22. ठीक है. हनीफा, so देखिए 1.22 आ रहा सबका. So take this as 1.22. Okay, 1.22. So will be Kelvin kg per mole. Just wait a second, okay? Okay. Now we have got the Kf, right? We have got the Kf for the solvent. We have got the Kf for the solvent. Now we will look at the second case. Second case में देखिए आपके पास क्या है? Second case में बहुत आराम से इन सब सवालों को कीजिएगा. You have got the first case. From the first case you have to calculate the Kf, and in the second case we have 1.6 gram of unknown compound. As soon as they have said unknown compound, then you must know that you have to calculate its molar mass, because unknown compound अगर formula दे दिया रहता, compound का नाम दे दिया रहता, then you would obviously get the molar mass. But they are not telling you the compound's name, the compound's molecular formula. That means they want you to calculate its molar mass. Unknown compound when dissolved in 86 gram of the same solvent. So we are having the same solvent. And same solvent means same Kf also. Same solvent means same Kf also. Depresses the freezing point. So freezing point is also given by 0.34 Kelvin. By 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of the unknown compound. है ना? यहाँ पे मोलर मास अच्छा आपको मोलर मास यूरिया का दिया हुआ था यहाँ पे. चलिए ये आसानी थी आपके लिए. Now second case, case 2. In case 2 we have unknown आपके पास तो है solute, लेकिन कितना है? 1.6 ग्राम ऑफ unknown solute है ना. 1.6 ग्राम ऑफ unknown के लिए एक शॉर्टकट होता है UNK. ओके, 1.6 ग्राम ऑफ unknown solute in 86 grams of same solvent. Again, you will use the same formula. Delta TF is equal to KF into M. ठीक है, डेल्टा TF is equal to KF into M. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे. डेल्टा TF is equal to KF into NB upon WA in kg. अब NB को भी एक्सपैंड कर देंगे, so this will be equal to what? KF into NB को एक्सपैंड करेंगे, this will be equal to WB upon MB. The given mass by molar mass, number of moles is equal to given mass by molar mass into WA in kg, and here will be delta TF. ठीक है, अब बस MB is equal to क्या आ जाएगा? MB will be equal to KF into WB upon delta TF into WA in terms of kg. WA in terms of kg. चलिए अब इसी को लिख लीजिए. KF आपके कितना आया था हमारे पास? KF था 1.22 केल्विन केजी पर मोल. 1.22 केल्विन केजी पर मोल into WB कितना आया था हमारे पास? 1.6 ग्राम. दिस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एडेड, 1.6 ग्राम. अच्छा, डेल्टा TF बताइए क्वेश्चन में देखिए कितना है. व्हाट इज द डेल्टा TF इन केस 2? अननोन सॉल्वेंट डालने के बाद हमारे पास डेल्टा TF कितना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज हाउ मच इज द डिफरेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गाइस? In the second case, when we add the unknown solvent, when we add the unknown solute. Yes, Alina, Hanifa, Zaid, you have written the question, na? Yes. हाँ बताइए फिर. 0.34. So 0.211. नहीं केस 2 है ना. अननोन आप लोग का ध्यान नहीं रहता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं ज्यादा. केस 2 में ना अननोन कंपाउंड डालने के बाद क्या आ रहा है डिप्रेशन, ये बताइए. 86.0. पढ़िए आप सवाल को. 1.6 ग्राम of unknown. व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जैद? क्या आप सुन नहीं रहे हैं मेरे सवाल को? क्या हम पूछ रहे हैं? The depression is 0.3834.
यस डिप्रेशन, आपने सारे जो भी नंबर लिखा था सब बता दिया आपने, है ना। ध्यान रखा कीजिए सर, 0.34 Kelvin into the mass in kg will be, so what is the mass of solvent? 86 grams will be equal to 0.086 kg. यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे this kg and this kg will get cancelled, and what else will be cancelled? Kelvin and Kelvin will be cancelled. अब आपको आंसर जो आ जाएगा that will be in grams per mole. चलिए, you have to calculate 1.22 into 1.6 divided by 0.34 into 0.086 shall be in moles gram per mole. मोलर मास आपका आ जाएगा। चलिए प्लीज कैलकुलेट दिस। आप लोग प्लीज ध्यान से सवाल वगैरह पढ़ा कीजिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा कुछ सवाल पढ़ने में मिस्टेक कीजिएगा तो कैसे चलेगा काम। So would it be 0.48? 0 पॉइंट तो नहीं आएगा, 0 पॉइंट तो नहीं आएगा, है ना। ठीक से कैलकुलेट कीजिए। I can obviously see that the numerator is larger than the denominator, है ना। Denominator is too small. I think हाँ शायद इतना आ सकता है, हो सकता है। 16 टेंस आपका कितना होता है? 16 टेंस है 160। देखिए ऐसे अगर जब भी सवाल हो आपके पास तो क्या कीजिएगा, हम बता रहे हैं। You will write 122 into 10 to the power minus 2 into 1616 into 10 to the power minus 1 divided by 34 into 10 to the power minus 2 into 86 into 10 to the power minus 3। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, 122 into 16 upon 34 into 86 into 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 को कैंसिल कर दीजिए। 10 to the power minus 3 it will go above and it will become 10 to the power plus 3, 10 to the power plus 3 it will be 10 to the power 3 minus 1 हो जाएगा ये, है ना, यानी कि 10 to the power 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। हनीफा आपने दिया था ना 0 पॉइंट करके कुछ जवाब। यस हनीफा। Yes, sir. I'll हाँ इसको calculate. कैलकुलेट कीजिए। हाँ आप कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। Oh, 9.37. कितना आ रहा है? 49.37. आप ऐसे बोलिएगा, आप तो स्पीक करेक्टली ना, थोड़ा सही से तो बोलिए हनीफा। 49.37. 49 नहीं। अलीना आपका कितना आ रहा है आंसर?
ये सलीना सर आई एम ट्राइंग, मुझे लेकिन Trying? गलत आ रहा है इसमें, लाइक बार 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 ऐसे बार ही आ गलत रहे आ रहा है। नंबर जी, 4 8 समथिंग ऐसे करके आ रहा है। ऐसे करके कैसे आ सकता है? मल्टीप्लिकेशन है, कुछ तो हार्ड नहीं है। ठीक है, लेट अस ट्राई, है ना? ध्यान ध्यान से देखिए। सो 16 दिस विल बी 8, 34 में क्या हो जाएगा? 70। करेक्ट है? यस और नो? यस और नो बोलते जाइए बस आप लोग। यस सर। 4 and 86 will be cancelled as 43. Correct है? Yes or no? यस सर। Yes, sir. Okay. Now we need to multiply because I don't think इससे आगे कुछ होगा। ठीक है? So we need 122 into 4. 122 into 4. 4 2s are 8. 4 2s are 8. 4 1s are 4. Correct है? So in the numerator we have 488. डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17, 43 into 17, 17 into 43 जो भी चाहिए कर सकते हैं आप लोग। 7 3s are 21, 3 1s are 3, 3 plus 2 5, 7 4s are 28, 4 1s are 4, 5 6. This will be 1, 8 5 13 का 3, हाथ मेरा 1, so this will be upon 731. सही है? Into 10 to the power 2. Is that right? Yes or no? Please tell me. कोई दिक्कत यहाँ यस तक? सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो No, ना? sir. नो नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए, अगर अप्रोक्सीमेट करना हो ना आपको, देखिए जब भी अगर इतने बड़े बड़े नंबर हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करें ना? 731 और यहाँ पे क्या है आपके पास? 488। ठीक है? Now when you have this type of numbers, then what you will assume? You will assume the case of 7 which is divided by 50 टाइप का केस। ठीक है? 700 और इसको क्या ले सकते हैं हम लोग? 500। ठीक है? बताइए कितने ज्यादा जाएगा? We can divide this by 9, 9. 9। 7 और 50 को सर 9 से 7 7 से 49। 7 ना, 7 7 राइट। ठीक है, तो पहले आप 7 7 से ट्राई कीजिए, है ना? 7 7 से मतलब 731 into 7 आप ट्राई कीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, कितना आ रहा है? 731 into 7, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 50 51। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इट इज कमिंग ग्रेटर देन 488, है ना? यस और नो? इट्स कमिंग ग्रेटर देन 488, यस और नो? यस सर। Yes. है ना? सो वी विल गो वन स्टेप बैक एंड विल राइट 6। अब उससे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यू हैव टू पुट अ पॉइंट हियर व्हिच विल मेक इट 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, सो यू हैव गॉट एक एक स्टेप में आपको पता चल गया कि 6 से जाएगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 7 6 जा 42 43, राइट? सो इट विल बी 6 जा 4 4 3 8 6। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करिए इसको, कितना आएगा? 10 में 6 गया 4, कितना हो गया ये? 7 में 8 मिल जाएगा, 17 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9, राइट? एंड हियर वी हैव अगेन 7, 7 में 3 जाएगा, 7 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। वी हैव अगेन गॉट 494, एक जीरो हम और लगा सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एडेड अ पॉइंट हियर, वी हैव ऑलरेडी एडेड अ पॉइंट। अब ये देख रहे हैं दोनों नंबर कितने नजदीक है? 4880 एंड 4940। कैन यू सी दैट दीस टू आर वेरी नियर टू ईच अदर? यस और नो? Yes. है ना? then that means again we can multiply it by 6. you will again get 4386। अब यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4, दिस इज नाउ 13, है ना? दिस इज नाउ 13, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ पे। दिस इज नाउ हाउ मच? नाउ 8 आई थिंक। सो 8 में 3 या 5 हो जाएगा फिर से, and this will be 0. Now we can add one more 0 because we have already added a decimal point. Okay, now as you can see it is just above, it is just after 4880, है ना? इन दोनों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। then you can add one more, that is you will add 7 up. ठीक है, you will add 7 up। अब यहीं तक आप छोड़ दीजिए, you will write the answer as 0.667 into 10 to the power 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 66.7।
ठीक है, ग्राम पर मोल। अलीना एंड हनीफा आप लोग कैसे कर रहे थे, ऐसे कैसे चलेगा काम? अच्छा एक बात बताइए, आपको डिवीजन में कोई दिक्कत है क्या, अलीना एंड हनीफा? No, sir. नो पक्की सर। बात? पक्की बात? सर कभी कभी मसला होता है जब ये बड़े वाले नंबर्स आते हैं तब। आपका बायो है क्या? नहीं नहीं, मैथ्स। फिर भी दिक्कत बट होता लाइक है? सर मैथ्स में डिफरेंट रहते हैं, ज्यादा इस तरीके से कैलकुलेशंस नहीं रहती ना। हाँ ये बात सही है आपकी कि लाइक दिस टाइप ऑफ माइन्यूट कैलकुलेशन इज ओनली स्पेसिफिक टू केमिस्ट्री एंड दीज चैप्टर्स ओनली सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, इसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट आपके कैलकुलेशंस रहेंगे, इवन इन सॉलिड स्टेट देयर आर माइन्यूट कैलकुलेशंस। ठीक है, बट लेकिन टफ नहीं है ना, इसमें आपको क्या रखना, बस ख्याल रखना है इसमें, राइट? यू कांट से दैट दीज आर टफ यस। कैलकुलेशन, दिस आर जस्ट, आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा, यू हैव टू टेक केयर व्हाइल यू आर सिंप्लीफाइंग थिंग्स। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन। Please remember when you have very large numbers like this ना, then what you have to do if you want to approximate कि where should I start from, यही दिक्कत होती है ज्यादातर बच्चों को कि where should I start from, like 731 and we have 4880, then what should be the number that we should multiply 731 in order to start the division? तो उससे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको you have to approximate, आप क्या कीजिए, इधर 7 रख दीजिए and you take the other number as 500 or 50, right? So now you can approximate, okay fine, 7 7 जाके आसपास से जाएगा, then what you do, you multiply 731 into 7 and you get that, okay fine, जा रहा है या नहीं जा रहा है, you can see that, and after that you can either increase the number, that you can also increase it to 8 if it requires। अब इस केस में हम लोग को घटाना था, यहाँ पे हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना था ना, 731 into 7 was greater than 4880, that is why we multiplied it by 6 not by 7। Write the answer, 66.7 grams per mole। Done guys, yes or no, please tell me। Yes, sir. Done, okay fine, chalo। So that is it for today, okay। अलीना एंड हनीफा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग कंसंट्रेशन टर्म्स वाली क्लास में नहीं थे क्या? आप लोगों ने नहीं पढ़ा I wasn't कंसंट्रेशन there. टर्म्स? यू वेंट I देयर। wasn't अलीना? there. अलीना? देयर सर, एक मिनट, आई चेक माय नोट्स। वैसे आई वाज देयर, यस सर आई वाज देयर। यू वर देयर, ठीक है। अब ये बताइए आप लोगों ने एनसीईआरटी कहाँ तक कर लिया कंप्लीट? टेल मी। The questions? हाँ हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चंस, और क्या, क्वेश्चंस की ही बात कर रहे हैं। बस I have done ढूंढना a ही आता few. है। ये सनिया, हनीफा बताइए, आप कुछ कह रही थी पहले, हनीफा बताइए। I've done a few of them. फ्यू? The back questions. हाँ एनसीईआरटी के, वही हम एन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस बता रहे, पूछ रहे हैं। अच्छा फ्यू ऑफ देम। अलीना आपने? यस सर आई हैव डन, लेकिन कुछ में आई वाजंट एबल टू डू, हमारी टीचर ने जो कुछ में? होमवर्क्स भी दिए थे। अच्छा तो आपने उसको मार्क किया है, बताइए। यस सर, एक मिनट। हाँ बताइए। 10 जैद आप? सॉरी, वो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 8 ऐसे और टाइप के क्वेश्चंस है। आई हैव टू चेक द टेक्स्ट बुक। हाँ थोड़ा थोड़ा आराम से, हम एक सेकंड टेक्स्ट बुक शेयर कर दे रहे हैं। या आपने अपने टेक्स्ट बुक में मार्क किया, या फिर आप सवाल देख के बता दीजिएगा? सवाल देख के बता सर दीजिएगा। मेरे टेक्स्ट बुक में मार्क किया है, आई विल ब्रिंग माय टेक्स्ट बुक। ओके। जैद यू डोंट हैव एनी अदर डाउट्स? No, sir. नहीं ना, ठीक है। अच्छा ऑल्सो टुमारो यू विल हैव अ क्लास, राइट? ठीक है, 6 o'clock से हालो Yes, एल्किन sir. हालोरीन, हालो एल्किन हालोरीन, ओके, इसलिए एन एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है जैद आप जा सकते हैं, यू हैव टू गो एंड हैव फन, Thank यू you, कैन sir. गो। ओके बाय बाय, टेक केयर। अच्छा हनीफा, आपके कोई डाउट्स हैं? No, sir. नहीं, कोई डाउट्स ही नहीं है No. आपके पास? ठीक है, तो फिर हम आपको डाउट्स के लिए कुछ देते हैं, है ना। सो चलिए आप मार्क कीजिएगा, ठीक है, इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। Okay. एनसीईआरटी खोल लिया आपने? जी. ठीक है, Yes. अब उसके बाद एन टेक्स्ट में चल जाइए, बिल्कुल आखिरी में, ठीक है। Yes, sir. अच्छा दूसरी चीज, एक और चीज जो हम आपको बता दे रहे हैं कि यू हैव टू मेक अ सेपरेट टेक्स्ट बुक, सेपरेट नोटबुक, है ना।
Yeah. Separate notebook for NCERT questions. Okay, that means अब देखिए आपके स्कूल में कुछ टीचर्स देते होंगे एनसीईआरटी के होमवर्क करके लाने के लिए, है ना जी। राइट, है ना। फिर हम भी बताएंगे कुछ करना है आपको, ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी ही है आपको। सो आप अगर आप एक बात बताइए, आप अगर आप अपने स्कूल टीचर को आप एनसीईआरटी आप बोलेगा सर हम एक ही टेक्स्ट बुक में एक ही नोटबुक में सॉल्व करते हैं ताकि हमको बाद में रिवीजन में आसानी हो, तो कुछ बोलेंगे क्या सर आपको? बताइए। नहीं बोलना चाहिए ना सर को, है ना, बिकॉज आप ये बताइएगा, देखिए अगर मतलब एंड हमारा गोल क्या है, आपका मेरा आपके स्कूल टीचर का सबका एंड गोल यही है कि आपके मार्क्स अच्छे आए, है ना। तो आप सर को बोलिएगा कि हम एक सेपरेट नोटबुक बनाए हैं जिसमें हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखते हैं, उसी में सॉल्व करते हैं, जो डाउट्स होता है अगर नहीं बनता है तो उसको काटते हैं फिर से उसी में बनाते हैं। तो यू विल मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ओके। एंड नाउ you start taking the questions, okay? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 5, 6 एंड 7, ठीक है। देखिए 2.1 से 7 तक 2.7, ठीक है। आई वांट दिस, आप इसका फोटो खींच के हमको करने के बाद अपना टेक्स्ट बुक का करने के बाद आप हमको फोटो खींच के भेज दीजिएगा, कब? ट्यूसडे को, ओके। ठीक है, हो जाएंगे ना? यस सर। ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप देखिए और हम बताते हैं। देन 2.8 2, अब ये देखिए जो चैप्टर है ना आपका अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त तक आपका एनसीईआरटी भी हो जाना चाहिए, है ना। आपने अभी तक नहीं किया तो फिर आपको अभी करना पड़ेगा। 2.8 से लेके यू विल डू क्वेश्चन टिल हाँ, इसमें अब जो है जो सवाल है ना दे आर नाउ मोर थियोरेटिकल टाइप, तो उसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर सकते हैं आपका। 2.8 से लेके 2.18 तक। You will send me on Thursday. Okay. ठीक है, ओके। देन अब इधर आप 2.18 को छोड़ दीजिए, 2.18 के बाद फिर इधर नीचे आ जाइए, बिल्कुल आखिरी के सवाल जो हैं कुछ कुछ वेपर प्रेशर आपका हो जाएगा रिजॉल्व 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, हाँ 3, 4 से 3, 4 से, है ना, 3, 4 से 3, 4 से 3, 8। ओके फाइन। Yes sir. Okay, Hanifa, and same is Yes. for you, Alina also. Okay, Alina. ओके सर। Okay, अच्छा आप बताइए डाउट क्या है आपका अलीना, मिला आपको सवाल? जी क्वेश्चन नंबर जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही थी इससे पहले वो था ये वाला 2.8। 2.8 आंटी प्लीज, आपने नोट डाउन कर लिया ना हनीफा? यस और नो, टेल मी। I have noted it down. सर मेरी हाँ क्लास लिख, स्टार्ट हो चुकी है मैथ्स की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक Can I ठीक ठीक है, leave? हमें अभी याद है। हाँ हाँ ठीक है, यू कैन लीव, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ओके ओके सर। फाइन। आई विल ट्राई टू सेंड इट थ्रू व्हाट्सएप, ओके ओके सर। ओके। ठीक है अलीना, आप भी इसको नोट कर लीजिए, ये आपको भी जी भेजना है, ठीक है ओके। ओके। चलिए, thank you Hanifa, thank you Alina, you can note this down and then you can थैंक यू leave, okay? सर। Thank you, bye bye, take care guys, thank you, Thank you thank you, sir. thank you.